Welcome back to first year physics lecture series. In today's video, we are going to discuss some past paper questions from work, power and energy. It says an object moves down under the action of gravity. Which of the following is true with respect to the work done by the gravitational field, which is the dot product of force and displacement, that is Fd cos theta, and the object's gravitational potential energy, which is negative of gravitational constant, mass of Earth, mass of object, divided by the separation between them. See, they are saying that the object is moving vertically downward. It is moving closer to the Earth. So this must be the direction of displacement. And they are asking you to calculate the work done by the gravitational force. So we must put in the direction of force of gravity, that is vertically downward, because gravity is always acted upon towards the Earth, right? So in this case, we say that F and D are both parallel to each other. This makes us conclude that this Fd cos theta will lead to Fd cos 0 degree, and this cos 0 is nothing but 1. You will get positive product of force and displacement. So you'd say that work done is positive. Now option A and D both have this positive work done. Let's just see how the potential energy changes, right? So they are saying that the object is moving closer to the Earth. That is, the separation between Earth and the object must be decreasing. That is, R is decreasing. You can clearly see that this R is inversely related to the potential energy. So we'd say अगर R decrease हो रहा है तो potential energy increase हो जानी चाहिए. But then you see a negative sign here. जब भी आपकी वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज होती है तो वी से दैट टेक्निकली इट इज डिक्रीजिंग, राइट? दैट इज व्हाई वी से कि -5 is smaller than -1 even though this 5 is greater, right? So we say potential energy decreases in the given situation. So option A needs to be the correct option. Then the energy possessed by a body because of its position is called potential energy. Kinetic energy is the one associated with the motion of the object, उसकी velocity की वजह से. Elastic potential energy is the energy stored in a stretched or compressed string, whereas the geothermal energy is the energy from the crust of Earth. Then which of the following statements is true about the term work with respect to physics? Work is a form of energy, clearly because they have same unit as well. It is a vector quantity. No, it is not. It is a scalar physical quantity, and so is energy. It has the SI unit of watt. No. What is the standard unit for power? The standard unit for work is joule, which could also be written as Newton into meter, right? Newton for force and this displacement के लिए meters. It has the formula force multiplied by time. No, this is the formula for impulse. The formula for work done is the dot product of force and displacement. Which of the following statement is true about kinetic energy? Let's just see what is the formula for kinetic energy. It is half m. ये half तो constant is. So this means कि kinetic energy is proportional to the mass of the object and it is the square of the velocity. यानी अगर किसी object का mass ज़्यादा है, किसी moving object का mass ज़्यादा है, so we say it possesses greater kinetic energy. और अगर कोई object greater speed से move कर रहा है, like it is moving faster, so you'd say that it has greater kinetic energy. Now, an object in motion possesses kinetic energy. Yes, it does. Um, an object placed on the ground possesses kinetic energy. No, क्योंकि उसकी velocity 0 है, तो it does not. A light object has more kinetic energy. No, it makes it clear. Greater the mass, greater will be the kinetic energy. A slow moving object has more kinetic energy. No, there's a statement made it clear. Okay, greater the velocity of the object, greater will be the kinetic energy. See, option A is the correct option. In the given diagram, which force does the maximum work as the block moves up on the inclined plane? See, they did not mention the magnitude of force or that of displacement. Work done is the product of force and displacement, right? Dot product. And we'll replace this dot with cos theta. So we'd write FD cos theta. Force और displacement तो इन सारे cases के लिए constant है because इन्होंने कोई different value mention नहीं की. तो हम कहेंगे now the work done depends on cos theta. एंड वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? ऑफ कोर्स जब cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू देगा. cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इट इज 1. एंड 1 किस एंगल पर आती है? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री.
राइट। अब देखें, दे आर सेइंग दैट ब्लॉक नीड्स टू मूव अप, राइट, यानी दिस इज द डायरेक्शन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो अब बताएं, अगर मैं कह रही हूँ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और मैक्सिमम वर्क आ रहा है थीटा 0 डिग्री पर, राइट, तो यकीनन फिर जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा। सो वी से इन दिस केस the force which is directed in the arrow shown in this option B would be the one जिसके केस में theta will be 0 and maximum work done मिलेगा। Then, which of the following quantities is defined as the rate of expenditure of energy? Rate of expenditure of energy is nothing but power, right? Or rate of work done is also called power because we just agreed that energy and work are interconvertible. How do you write force? It is the product of mass and acceleration. How do you write work? Dot product of force and displacement. How do you write power? Rate of expenditure of energy. How do you write impulse? It is force multiplied by the time interval for which the force has been acting on the object. The following diagram represents a boy lifting a block in an upward direction. That is displacement की direction है ये. Work done by the gravitational force. Gravitational force की अपनी direction क्या होती है? Vertically downward, right? अब कह रहे हैं बताएं वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, या पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म्स में उसको आंसर करें। वर्क डन इज अगेन एफ डी कॉस थीटा। अब देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या है, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, सो वी से दैट द एंगल इज 180 degree and cos 180 degree is nothing but 0. 0 multiplied by fd will give you 0. So we say that in this case work done by the gravitational force is 0. Then, if half mv square, which clearly is the kinetic energy, plus Fh equals mgh, then the object must be moving upward in resistive medium, downward in resistive medium, upward in a non-resistive medium, downward in a non-resistive medium. Let me just tell you that this F here is the force of friction, right? एंड क्योंकि फ्रिक्शन को इन्होंने मेंशन कर दिया तो फिर एक बात तो तय है, आप एक नॉन रेजिस्टिव मीडियम नहीं कंसिडर कर रहे, आप अपने मीडियम की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो दिस मेक्स अस एक्सक्लूड दीज टू ऑप्शंस। अब ए और बी में से हमें सेलेक्ट करना है। हाउ डू वी राइट एनर्जी की इक्वेशंस किनेटिक और पोटेंशियल के लिए? हम कहते हैं अगर आप नॉन रेजिस्टिव मीडियम की बात करें, यानी अगर आप फ्रिक्शन को इग्नोर करें, तो जो भी चेंज इन किनेटिक एनर्जी होगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। उस केस में हम कह देते हैं कि हाफ एम वी स्क्वेयर मस्ट इक्वल एम जी एच। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर ये फैक्टर है, इन अदर वर्ड्स हम एक रेजिस्टिव मीडियम की बात करें, व्हाट डज दिस इक्वेशन से? हम कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर था, राइट, इसके पास इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0, बिकॉज इसकी हाइट 0 है। किनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी विच इज हाफ एम वी स्क्वेयर। जब आप इसे अपवर्ड थ्रो करेंगे, इसकी किनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट डिसेलरेट होता जाएगा और फाइनली मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी 0 होने की वजह से किनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बिकम 0 और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी mgh, राइट। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था तो आपने इसको कुछ ना कुछ किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की। ये किनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द जर्नी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती अगर आप कोई नॉन रेजिस्टिव मीडियम कंसिडर करते हैं। लेकिन क्योंकि मीडियम रेजिस्टिव है, तो अब ये जो आपने इसे स्टार्ट में किनेटिक एनर्जी दी थी, इसका कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लगेगा, जिसे हम कहते हैं विल बी। इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे हाफ एम वी स्क्वेयर इज नाउ नॉट इक्वल टू एम जी एच, इट इज इक्वल टू एम जी एच प्लस work done against the friction, and work done is nothing but force and displacement. F for frictional force and this H here to represent the displacement, right? और अगर आप इसी के ऑपोजिट सिचुएशन कंसिडर करें, एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर था, इस वक्त इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल जी थी mgh. नाउ दिस ऑब्जेक्ट वाज अलाउड टू फॉल फ्रीली। अब जैसे जैसे ये डाउनवर्ड आएगा, ग्रेविटी की वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, किनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑन द एक्सपेंस ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अगर तो ये मीडियम नॉन रेजिस्टिव होता तो हम कहते हैं सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बट क्योंकि दी मीडियम इज रेजिस्टिव तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कुछ विल बी यूटिलाइज्ड
to work done against the force of friction. So in this case, we'd say this exact equation, that is mgh equals half mv square plus fh. I believe now you'd be able to answer this question. Object is moving downward and in a resistive medium. Then if a crane lifts a weight of 500 Newton, see weight is the force of gravity. So weight और force दोनों का unit same होता है. आप weight लिखे या आप directly product of mass and gravity लिखें, एक ही बात है. 500 newtons आ गया to a height of 50 meter, यानी जो उसने displace किया है object को, जो इन्होंने height mention की है, it is 50 meters in 5 seconds. Time जो इन्होंने mention किया, it is 5 seconds. Average power of the crane will be, अभी हमने ऊपर डिफाइन किया था. हाउ डू वी डिफाइन पावर? पावर इज द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम तो मेंशन है. हाउ अबाउट द एनर्जी? केसेस में दे डू नॉट डायरेक्टली मेंशन कि वो किस एनर्जी की बात करें, बट हम सिचुएशन के हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं, राइट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मेंशन किया गया. तो अभी तो हमने पढ़ा था एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो इस केस में मैं एनर्जी की जगह लिख दूंगी mgh एंड दिस t as it is. All we have to do is multiply mass and gravity. अलग अलग mass और gravity नहीं है, we directly have the product of mass and gravity, right, which is 500 with the height 500 into 50 over the time taken to raise the object to this certain height, which is 5 seconds. Simplify this expression and you'll get 5000, and of course watt is the unit of power. A water pump lifts water through a height of 5 meter at the rate of 0.2 kilograms per second. Power required by the water pump is, they've again provided you with the height which is 5 meters, and यहाँ पर इन्होंने बड़ी एक स्ट्रेंज सी कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है जिसका यूनिट हमने पहले कभी नहीं सुना, राइट. देख लेते हैं क्या दिया. इन्होंने दिया है किलोग्राम्स पर सेकेंड, यानी ये जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, mass divided by time, because mass का unit आ गया kilogram and time के लिए we have this second. We have 0.2 kg per second. Again you have to calculate power. Power is rate of expenditure of energy. Again उन्होंने कोई height mention की है, यानी हम potential energy की बात करें, and this time as it is. Gravity is understood, नहीं mention किया तो it has to be 9.8 meters per second square. Height is given in C, m over t is already given. अलग अलग name provide किया mass और time, but इन्होंने इसका ratio directly provide कर दिया. So all you have to do is just put in the values in this equation and you will get to know the value of power. So here we have 0.2 for m over t multiplied by gravity, which is 9.8, and height, which is 5. This gives us 9.8, राइट. एंड उसका नियरेस्ट कौन सा है यहाँ पर, 10 वॉट. यकीनन उन्होंने ग्रेविटी को 9.8 के बजाय 10 कंसिडर किया होगा. वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी in a gravitational field depends on initial position of body, final position, path taken, इनमें से किसी एक हाथ पर या इन सब पर. हम जब वर्क डन का और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं work done does not depend on the path taken by the object. It only depends on initial and final position of या initial and final state of the system या position of the system, right. It is independent of the path. यानी अगर आप एक object को point A से point B पर move करवा रहे हैं तो it does not depend if you are following this path 1, 2 or 3. These paths clearly have different path lengths, right. लेकिन work done does not depend on length of the path. It depends on displacement in the direction of force, and so it is independent of the path length. So we say it only depends on initial and final position. अगर आप A से B तक लेकर जा रहे हैं तो फिर और भले जिस मर्जी पाथ से आप ऑब्जेक्ट को ले जाएं, work done will remain the same. So it depends on initial position and final position. 1 and 2 needs to be the correct option here. Then a 100-watt lamp power is given. 100 watt is switched on for 5 hours each day for 3 weeks. टाइम मैं कितना लूँ, हर दिन 5 घंटे, और ऐसा 3 weeks किया गया है. 3 weeks में we have 21 days and हर दिन 5 घंटे. तो मैं अगर टाइम इन आवर निकालना चाहूँ तो all I have to do is multiply these values, right. We'll get 105 hours in this case.
Then cost of 1 unit of electricity is $0.24. How much does it cost to run the lamp for this time? पहले तो हम ये पता करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है, राइट, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, और फिर हम देख लेंगे कि अगर 1 यूनिट की कॉस्ट ये है तो जितने यूनिट्स अब कंज्यूम हुए हैं उसका टोटल बिल क्या बनता है, राइट। पहले हमें पता होना चाहिए दी कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज किलोवाट इनटू आवर. Watt is the unit for power, hour is the unit for time. See, power multiplied by time is nothing but energy, right? So this makes us establish the fact that this is the unit of energy as well. बस हमने एक prefix लगा लिया यहाँ पर और साथ में हमने standard unit नहीं consider किया, ठीक? So first of all, अगर मुझे एनर्जी निकालनी है किलोवाट इनटू आवर में, तो पहले मेरे पास पावर किस में गिवन है, वॉट में, मैं इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लूँ. हाउ सो? Watt divided by 1000 will give you kilowatt. 100 divided by 1000 will give you 0.1 kilowatt, right? And time is already given in hour, no need to convert it into the standard unit, right? क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है और उसके लिए हमें कमर्शियल यूनिट को फॉलो करना पड़ेगा. अब हम अपनी वैल्यू को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे. नाउ मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है. आई मल्टीप्लाई पावर इन किलोवाट एंड टाइम in hours, that is 0.1 multiplied by 105. This would give us 10.5 kilowatt hour. And question में mention है the kilowatt hour is the unit for electricity, right? So अगर ये कह रहे हैं कि एक यूनिट $0.24 का, that is 1 kilowatt per $0.24 का बिल आएगा. So अगर 10.5 kilowatts है तो कितना बिल आना चाहिए? 10.5 multiplied by the cost for each unit, that is $0.24. This gives you $2.52. Option C is the correct option here. When speed of your car is doubled, the kinetic energy would. Kinetic energy is of course associated with the motion of object, right? It is half mv square. They are saying कि कार की स्पीड हमने डबल कर दी, यानी अगर पहले स्पीड को हम v से मेंशन कर रहे थे तो इस बार स्पीड क्या है? It is 2 times. This is square as it is. Rearrange करें जरा. This square will be applied on these two. 2 का square is 4 v square. Just rewrite this equation, half mv square as it is, and this 4 comes here. ये पूरा फैक्टर तो ओरिजिनल किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है. से अगर स्पीड डबल हो रही है तो किनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. अगर स्पीड ट्रिपल होती तो किनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाती. Then it says in the given graph the total work done is. आपको पता होना चाहिए कि the area of velocity time graph gives us information about distance, right, covered by the object. इसी तरह the area of force and displacement curves gives us the information about the work done on the object. तो यहाँ पर हम इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे to calculate the work done. या तो आप डायरेक्टली ट्रपेजियम का फार्मूला अप्लाई करें कंसिडरिंग के दिस लुक्स लाइक अ ट्रपेजियम, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आप कहेंगे दिस इज अ स्क्वायर एंड देन दिस इज अ ट्राइंगल. मुझे अगर इस पूरे ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है बट मुझे नहीं पता कैसे कैलकुलेट करूं, लेकिन आई कैन क्लियरली सी हियर कि दिस लुक्स लाइक स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल. मुझे पता है स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, और मुझे पता है ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, इट इज हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, राइट. दिस इज व्हाट वी नीड टू डू हियर. इस पार्ट के लिए आप इस स्क्वायर को कंसिडर करें. इसकी लेंथ क्या है? 0 से 5 तक, 5 माइनस 0 विच इज 5. इसकी ब्रेथ क्या है? लाइक दैट इज अप टू यू, लेंथ हाइट ब्रेथ किसी को भी कंसिडर कर लें. 0 से 5 तक, again 5 minus 0 will give you 5. This half as it is. Triangle के case में what is the length? It is starting at 5 and it is ending at 10. So you would say it is 10 minus 5, which is 5. And how about the height of this triangle? इसकी base कहाँ पर है? 0 पर, and इसका top कहाँ पर है? 5 पर. So it says कि जो यहाँ पर आप पैरामीटर प्लेस करेंगे, it is 5 minus 0, which is 5. 5 into 5 is 25 plus this half. 5 into 5 is again 25. This makes it 12.5. 25 plus 12.5
gives you 37.5 and क्योंकि work done है ना तो work done का और energy का unit same होता है which is joules. Which of the following diagrams represent zero work done? इन्होंने नहीं मेंशन किया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वी से फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स साथ में cos थीटा, वर्क डन डिपेंड करेगा cos थीटा पर, राइट, विद दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जीरो वर्क डन कब आएगा? जब cos थीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी. cos जीरो कब देगा? कैलकुलेटर में cos इनवर्स ऑफ जीरो प्लेस करके देखें, इट विल गिव यू 90 डिग्री. यानी if the angle between force and displacement is zero, then the work done by this particular force will be zero. This is the case जिसमें force और displacement में 90 डिग्री का एंगल है.